Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 6 and the name of our chapter is Light and Sound, and today we are going to discuss about sources of light. So my dear students, मैं आपको इस chapter का complete introduction दे चुकी हूँ. Today is the first lecture. So let's start it with an activity. So my dear students, sound and light is the name of our chapter. So here you can see two sources of light. एक sun है, दूसरा एक candle light है. So quickly tell me, identify that given pictures are either of artificial or natural sources of light. आपने बताना है कि दोनों जो sources हैं क्या ये natural हैं या artificial हैं. Or also think and tell that what type of artificial light sources used in your homes. So अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को देखें तो अब आप मुझे इनमें से बताएं इनमें से कौन सा सोर्स जो है वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, एंड विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ऑफ कोर्स सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. वेयर इज अ लैम्प और अ कैंडल, इट इज अ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. अब आप जल्दी से जरा सोचें, वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि आपके घर में कौन कौन से आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं. Very good. Bulbs, LEDs, tube lights, these all are artificial sources of light. Okay, my dear students. So now in today's lecture, students will be able to identify natural and artificial sources of light. आज के लेक्चर में बच्चे natural और artificial यानी कि man made और natural जो कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ sources हमारे इर्द गिर्द बनाए हैं जो कि naturally exist करते हैं उनको identify कर सकेंगे. Okay, so now let's quickly look at the Islamic perspective. So Allah says in Quran, it is He who made the sun a shining light. यानी कि सूरज को एक चमकने वाली चीज बनाया, and the moon a derived light. यानी कि जो चांद है वो सूरज की रोशनी की वजह से चमकदार हमें नजर आता है. And determined for its phases that you may know the number of years and account of the time. Allah has not created this except in truth. He details the signs for people who know. So my dear students, रोशनी इतनी अहम है कि चांद चमकता है रात को, सूरज चमकता है दिन में, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ फेजेस ऑफ मून है उससे आप दिन रात, इसके अलावा जो मुख्तलिफ साल और महीने हैं इनको भी हम इनकी भी चेक रख सकते हैं. So my dear students, now let's quickly look at the pre-reading question. So quickly tell me that is it possible to see without light? क्या आप बगैर रोशनी की चीज देख सकते हैं? No, we cannot see without light. What does light mean in your life? आपकी जिंदगी में रोशनी की क्या अहमियत है? क्या समझते हैं आप रोशनी से? देखने के लिए इस्तेमाल होती है, सजावट के लिए इस्तेमाल होती है, इसके अलावा हमें दिन में इसकी ज़रूरत है, रात में इसकी ज़रूरत है. रोशनी जो है इसकी एनर्जी से हम बहुत सारे काम जो हैं वो रोज़मर्रा पे करते हैं. तो रोशनी जो है ये एक बहुत ही अहम चीज़ है हमारे लिए. ठीक है, ज़िंदगी रोशनी के बगैर नामुमकिन है. Okay, my dear students, so let's quickly move forward towards reading. So I request you all to please open Source of Light in your Science 5 books, chapter number 6. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. But before that, let's quickly refresh your knowledge and quickly tell me how can we see things in the dark? आप अंधेरे में चीजों को कैसे देख सकते हैं या आप देख सकते हैं? No, we cannot see in dark. We need light to see around us. Okay? Now, sources of light. Natural sources of light. Where does light come from? रोशनी कहाँ से आती है? Sun is the prime source or the main source of light. The moon gives light during the night time. चांद जो है वो हमें रात में रोशनी देता है, but it cannot produce its own light. लेकिन ये अपनी जो रोशनी है वो इसकी खुद नहीं होती. It is the light of the sun that falls on the moon's surface and reflects towards the earth. चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है जमीन की तरफ. Stars also shine at night. Sun, moon and stars are natural sources of light. सूरज, चांद और सितारे जो हैं ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन सूरज और सितारे
यानी कि सन इज ऑल्सो अ स्टार, लेकिन इनकी अपनी रोशनी होती है, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। Here you can see कि जब सूरज की रोशनी जो है ये डायरेक्ट अर्थ पर पड़ती है, और इसके अलावा आपको सितारे जो हैं वो रात को चमकते हुए नजर आते हैं। चांद जो है ये सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर कर हमारी तरफ, अर्थ की तरफ भेजता है, जिससे ये आपको चमकता हुआ नजर आता है। सो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कौन कौन से हैं? सन, स्टार्स एंड मून। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, light can also be produced artificially. Electric bulbs and tube lights are commonly used as artificial sources of light. अब रोशनी को आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, उनको आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है और इनको इस तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है। These sources are mostly fixed and are used in houses. ये जो सोर्सेज हैं ये अक्सर घरों में, दफ्तरों में लगे हुए होते हैं, जिनसे हम देख सकते हैं। कैंडल्स, नियॉन एंड सोडियम लैंप्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट आर्टिफिशियली। इसके अलावा मोमबत्तियां, नियॉन और सोडियम लैंप्स जो हैं यानी कि ये भी रोशनी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनको भी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। So this is candle, artificial source, LED bulb, neon lights, these are all artificial sources of light. ये हमारे घरों में रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। Now is the time for evaluation. So quickly tell me that what are natural sources of light? Moon, sun and stars are natural sources of light. What are artificial sources of light? LED bulbs, neon lights, sodium lights, candles, these are all artificial sources of light. Okay, now is the time for practice, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and roll number. Identify and write natural and artificial sources of light. So यहाँ आपके पास कुछ sources of light हैं, आपने बताना है one by one नीचे लिख के कि कौन सा artificial source है और कौन सा natural source है। For example, car lights, this is artificial. Sun is natural source, candle is an artificial source of light, moon is also a natural source of light. So pause the video and quickly complete this worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the next part of the worksheet. What is meant by light in your life? आपकी जिंदगी में रोशनी से क्या मुराद है? Write it down now. Difference between natural and artificial source of light. So आपको इनके दरमियान में डिफरेंशिएट करना है। एग्जाम्पल्स भी दीजिएगा और बताइएगा कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हम किसको कहते हैं और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हम किसको कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज होमवर्क. फॉर होमवर्क you will do question number 3 from section C given on page number 90. You will do it in your notebooks. And my dear students, now is the time for wrap up. For wrap up today we have learned that sun, moon and stars are natural sources of light. Sun is prime source of light. Moon reflects light of the sun to earth. Candle, electric bulbs, neon lights and sodium lamps are artificial sources of light. Okay, my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.